Hello students, a very good day to all of you. After our previous topic, Fundamental Rights, PIL, Legal Aid, Legal Services Authority Act, we are now heading towards the topic that is Directive Principles of State Policy. So these directive principles, basically these are the guidelines, these are the principles that are given to the governments, both central and state governments of India, to be kept in mind while framing the laws and policies. These are the set of guidelines the government has to follow while framing the laws, because they are pivotal in shaping India into a welfare state. We had been converted from laissez-faire or police state to a welfare state, because we as a state are ensuring the social, economical and political justice for all the citizens. So now, if I talk about that, where these directive principles are given in our constitution, these directive principles of state policy are under the part 4 of the constitution. Part 4 of constitution, having the articles 36 to 51. We say that it comes under the DPSP. We have borrowed this idea of guidelines or directives from Irish constitution, and in Irish constitution they were having the concept of the guidelines which the state has to follow while framing the laws, to check that whether all the laws which are framed are consistent with this part. So in our constitution, part 4 enshrines the DPSP part from articles 36 to 51. These are very important because the state governance is based on these DPSPs. They outline the socio-economic principles which are important while framing the further laws, and state should follow these guidelines while framing the same. These, the part that the word I can say is non-justiciable. Non-justiciable means that not enforceable by any court, because see, fundamental rights are the rights given to individuals, and state has the opportunity or the responsibility to guarantee these rights to the individuals. And when there is a violation, a person can go to the court, apply the case, file the case in either Supreme Court under Article 32 or Article 226 of High Court, and say or ask from the court to give the justice and ask for remedies. Here DPSP are not rights, they are not directly rights given to the individuals, and because they are not rights, therefore their violation also is not possible, because it is not the right conferred to an individual. So DPSP are non-justiciable, and because they are non-justiciable, they are unenforceable in the court of law. So that means that this cannot be enforced by any court of law. 37 article says that explicitly it is mentioning that fundamental in the governance of the country. It is fundamental in the governance because it aims at establishing a welfare state, because socio-economic justice we had to provide from this only. So now comes his third thing, that is why it is important. The primary objective is to guide the state. State को क्या help करना है, state को ये बताना है इन guidelines के through that the social, the economic and political justice is to be provided. We see the 4 words as objectives of constitution in the preamble itself, that is justice, liberty, equality, fraternity. So in justice, all the 3 types of justice, social, economic, political, so these 3 have to be provided to the citizens, and while these justice are being provided, it is said that the establishment of welfare state has been done, and in this welfare state every citizen has the right to enjoy a dignified life. So to ensure this, the importance of part 4 is there. Now if I talk about what are the historical roots or inspiration, I already told you that these philosophical pointers in DPSP of India are being taken from Irish constitution. From Ireland we have adopted this, and in Ireland's constitution it came in 1937, and in 1937 when it came, it adopted the DPSP
thing from Spanish Constitution. So the thing is, see, if you see the inspiration has been taken from directly from Ireland and indirectly from Spanish Constitution. And if I talk about what is the global ideals, so we have UDHR 1948. So there is a great influence included in UDHR also, and there are certain revolutionary documents of France and America, and they all are advocating for human dignity and rights. So human dignity and rights can only be provided to the person or the individuals or citizens, and including non-citizens, when the state is guaranteeing the same and framing the laws in such sequence that they are under the aspect of DPSPs or any kind of guidelines or directives which help in framing the laws, that they are providing justice which is social, economic and political. If I talk about that, it was the vision of whom? So it was under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar and Jawaharlal Nehru. B.R. Ambedkar, because he was the head in the drafting committee, and Jawaharlal Nehru, why? Because the objective resolution was made by Jawaharlal Nehru. It was brought up by him, and our preamble is totally based on the objective resolution by Dr. Jawaharlal Nehru. So in his document it was incorporated that these principles must be there, and the aim of establishing these principles was to convert the state into social welfare state. And in social welfare state, the main aim is to prioritize the well-being of the citizens, their rights and their liberties. Coming on to the core objectives. So core objectives, if I talk about, first of all, DPSP can be divided into three parts. First is socialist, second is Gandhian, and third is liberal intellectual. Liberal intellectual. So if I divide these 36 to 51, Article 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A and 47 falls into socialist. If I talk about Gandhian, 40, 43, 46, 47 and 48 falls into Gandhian principles, and liberal intellectual principles falls into 44, 45, 48A, 49, 50 and 51. So one by one I'll discuss each of them. First of all, let's see what is the core objectives. Providing all these three kind of principles, it promotes welfare and social order, because to provide justice which is social, economic and political, and the state has to ensure that every citizen has the opportunity to thrive. So the main aim would be the promotion of social welfare state and the social order in the society. Minimum inequalities, because we are trying to reduce the gap between the rich or poor, between the citizens, and on basis of any of the discrimination we are reducing the gap, and discrimination we are making it to the point of zero. So for the removal of discrimination, it is important that we have to foster more egalitarian society. Next is equitable resource distribution, because the state has the responsibility to ensure the fair distribution, therefore equal distribution of wealth or any resource has to be taken care of. Equal pay for equal work means if any male or female is there, or any gender inequality is there, the thing which has to be taken care of is that equal remuneration for men and women. How these all articles, how these objectives are being provided by DPSP, we see one by one into our articles. So first is Article 38. Article 38 is promote welfare of the people by securing social, economic and political justice. The same we were just discussing, that we had to provide all three kinds of justices for the promotion of welfare of the people and inequalities in income, status, facilities and opportunities. 39 says that certain principles of policy such as equal
right to livelihood, equal distribution of resources to serve the common good, avoid of the concentration of wealth, also equal pay for equal work, and protection of children and youth against exploitation. So there are number of things covered under this single article. It is very important because it is directing the state of these all things. 39A is not mentioned here. 39A means equal justice and free legal aid. We have discussed this particular article in our previous videos of legal aid, where it is the responsibility of state to provide the person legal representation in the court when the person is of vulnerable state and cannot afford the legal aid. So here the state has to provide the same. Next is 41. 41 is right to work, education and public assistance. This means that in case of unemployment or in case of old age, sickness, disablement, the state has the economic capacity, and in this economic capacity it has to take care of that. It has to provide the citizens right to work. It has to see that whether the education is being provided to the students or children, and public assistance if there is any kind of issues of such as unemployment. Next is 42. 42 is just and humane conditions of work, कि इस तरह का वर्क प्लेस होना चाहिए जहाँ पे लोग अच्छे से काम कर सके, एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ वर्कर्स, कि वर्कर्स जहाँ जिस जगह भी काम कर रहे हैं तो वहाँ की कंडीशंस अच्छी हो, एंड एंश्योर अ डिसेंट स्टैंडर्ड of life of all workers. At least इतना तो कर ले that they can manage their daily livelihood on their own. 43 is life wage and decent standard of life of workers, and 42 is just and humane conditions of work and maternity relief. Maternity relief के बारे में 42 talks about, and 43 is talking about the conditions of work ensuring a decent standards. So these collectively are called as bedrock of India's commitment to social and economic justice, and their whole aim is कि provide the dignified life to all the sections in the society. Next is 47. I will cover 47 here also, which comes under the socialist principles, and 47 says that duty of state to raise level of nutrition, standard of living and improve the public health. So public health section is somewhat given under 47. Next is Gandhian principles. Gandhian principles is article 40. Gandhian means based on the philosophy of Gandhi ji, और इनकी philosophy क्या थी? Self-reliant villages and somewhat kind of moral society. 40 says organization of village panchayats. Village panchayats, I already told you कि ये जो पंचायत का जो कॉन्सेप्ट था, दिस वॉज गिवन बाय गांधी जी, एंड इनका कहने का मतलब था कि एवरी विलेज शुड हैव इट्स ओन लोकल सेल्फ गवर्नेंस. तो वो जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है केम एज पंचायत्स. 40 after 40 it is 43 also, promotion of cottage industries, because people are working into the small industries, they are making their own manufactured products, so the kind of promotion is under article 43. Next is 46. 46 talks about promotion of educational and economic interests, specifically of SCs, STs and weaker sections. Why educational and economical? Because it is presumed that the weaker sections of society such as SCs, STs or these weaker sections, they cannot afford these things. So to reduce the gap and to promote their education, to bring them into the competition, 46 under 46 state has to ensure that all these things are provided to the citizens. Next is 47. 47 talks about prohibition of intoxicating drinks and drugs harmful to health. So intoxication article is 47, intoxicating drinks and drugs, and this has to be prohibited by the state so that it could be ensured कि जो health है वो लोगों की अच्छी रहे, improvement हो health में. Next is 48 into this Gandhian only, organization of agriculture and animal husbandry on modern lines, prohibition of cows slaughter. The thing is कि यहाँ पे जो agriculture में जो animal husbandries हैं, जहाँ पे जो animals का उनको रखा जाता है, उनका further कैटल्स को रखते हैं, और यहाँ पे जो काउ स्लॉटर है उसको रोकने के लिए आर्टिकल 48 इज रिस्पॉन्सिबल. 48 गिव्स द डायरेक्शन टू द स्टेट टू इंश्योर कि ये सब चीज़ें या तो प्रेजेंट हो, और अगर प्रोहिबिशन है तो वो चीज़ें स्टेट रोके, एनी हाउ उसको इम्प्लीमेंट करवाए. These principles underscore the importance of rural development because Panchayati Raj has came into pictures cooperative societies for the promotion of cooperative societies and prevention of India's rich cultural
values and a holistic approach to national progress, because this is the part which is telling the ideologies, the diverse philosophies where the state has to work upon following these principles. One more is left, that is liberal and intellectual principles. In these there are certain articles which are 44, which says that uniform civil code. We already know uniform civil code means all it's the same laws for each one of us, despite of which religion we are following. 45 is early childhood care and education, which says that the age of child would be below 6 years, so the education below 6 years and early childhood care has to be provided to each of the child. 48A is about protection and improvement of environment and safeguarding the forest and wildlife. For the protection of environment and for the protection of forest and wildlife, 48A is responsible. 49 is for the protection of all the monuments of national importance, how we are going to preserve them, what the guidelines state has to follow, or what other pointers the state would follow to preserve the same. 50 is separation of judiciary from executive in public services. Very important article, very very important, because it gives judiciary, whatever we see in the features that we have independent judiciary, it comes from article 50, that judiciary is separate from executive because there is no political influence present in its judicial interpretations. Last is 51, which says that promotion of international peace and security. And international peace and security, therefore it talks about to encourage arbitration, and there is a respect for international law also. Arbitration, because maybe there are some disputes between the countries, and when the disputes are there, the resolution should be ADR methods, arbitration dispute resolution methods, those should be encouraged so that international law is respected, is followed in its whole, as a form of whole law. And also the country should not have any kind of cold war between the any other country, so that the peace could be promoted and peace and security shall be taken care of. Next comes is DPSP versus fundamental rights, complementary yet distinct. So there are certain features. We'll go into not deep into this because I have the difference slide also, but let's just see the differences, because it is non-justiciable, therefore not enforceable by court, and in fundamental rights it is enforceable. Collective welfare is to be talked about, that is societal well-being is being taken care. Here the protection of individual rights, not the society as a whole. These are negative obligations because these impose restrictions on the state. These are positive because these are imposing duties on the state to achieve certain goals. These are the certain pointers which the state has to follow. So it's a kind of positive point. Enforced by courts, because citizens can seek for judicial remedy if violated. अगर fundamental rights violate होता है तो जो court है वो directly अप्रोच किया जा सकता है बाय द सिटीजन्स. मॉरल कंपास, बिकॉज सिर्फ एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि फर्दर जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी उनको इन वाले आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए बनाना है. नेक्स्ट कम्स इज कि इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसा होगा. इम्प्लीमेंटेशन होता है बिकॉज दे आर नॉन जस्टिसिएबल बट इम्प्लीमेंटेड बाय वेरियस लेजिस्लेशंस. जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, तो इसके लिए हमारे पास इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट है 1976. तो हमने इंश्योर कर दिया कि ठीक है, अगर हमें 39 को मानना है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बन गया. पंचायती राज के लिए वी हैव 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स के लिए जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात हो गया, बिहार हो गया, दे हैव वेरियस एक्साइज लॉ जो इन चीज़ को रोकता है. राइट टू एजुकेशन में वी हैव 21A और अलग से राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए वी हैव इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फॉलोड बाय वेरियस अदर एक्ट्स जो हेल्प करता है इन दी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन. वाटर एक्ट, एयर एक्ट, दीज कम्स अंडर दी एप्लीकेशन ऑफ दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओनली. लीगल एड में हेल्प करेगा 39A में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सो ये जो
DPSPs हैं, इनका डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस है वो क्रूशियल लॉज पे है। और ये जो लॉज हैं ये कहाँ से, ये जितने भी लॉज निकले हुए हैं ये इसी चीज़ से निकल के आए हैं, दैट स्टेट इज ensuring the protection and the welfare of the state, specifically the laborers, if we are talking about minimum wages and child labor prohibition, rent regulation act and maternity benefit act। ये जो 5 year plans है ये क्या है कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, पॉवर्टी का गैप कम करने के लिए, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो 5 year प्लान्स हैं ये निकाले जाते हैं। और ये क्या है, एक तरह की गाइडलाइंस पे ही बेस्ड हैं, DPSPs पे ही बेस्ड हैं, जहाँ पे स्टेट ये इंश्योर करता है कि जो हमारा स्टेट है दैट इज़ वेलफेयर स्टेट, वहाँ पे इंडिविजुअल्स के वेलफेयर की ही बात हो। लीगल एड फॉर पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, वी ऑलरेडी डिस्कस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सो दैट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स इज बीइंग promoted। Sustainable development, where we are protecting the environment, we are promoting the international peace and security, and we are also adhering to the global commitments and global laws such as UDHR 1948। So if I talk about the challenges and criticism between DPSP and fundamental rights, we have to see that what kind of relationship do we have। So these pointers we have already discussed कि non enforceability होगी, there is a conflict between DPSP and fundamental rights, क्योंकि यहाँ पे जो judicial interpretations है वो बताता है ज़्यादा important कौन है, this fundamental rights और if we can say DPSP। So ये जो collective welfare objectives हैं या जो individual liberties हैं क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हमें इस पे ज़्यादा क्लैरिटी देते हैं। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं, क्योंकि अगर फुल रियलाइजेशन करवाना है DPSP गोल्स का तो वहाँ पे इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी होती है, इसीलिए दे फेस सर्टन काइंड ऑफ चैलेंजेस इन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटिंग दीज आर्टिकल्स इनटू द नेशन। बट जो भी हो, ये जो DPSP है इट रिमेन्स इनवैल्यूएबल moral compass because it is very important in the development and growth of governance in the country, और इसकी वजह से just and equitable society को maintain करने। Okay, so now if I talk about कि relation क्या है actual में fundamental rights और DPSP का। Fundamental rights का we already know that it is given under part 3 12 to 35 and DPSP is part 4 which is 36 to 51। सो फाउंडिंग पिलर्स हैं, दोनों ही फाउंडिंग पिलर्स बनते हैं हमारे, बट क्या रिलेशनशिप है दोनों में, सेम part 3 of the constitution and part 4 of the constitution। It is providing the freedom to the individuals in which the individuals are being protected against the state encroachment, जिससे कि state कोई arbitrary काम ना कर पाए, and these are directly enforceable by courts, क्योंकि 32 के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के अंदर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। so therefore हमारे पास ऑप्शन है कोर्ट्स में जाने का और अपने राइट्स को इन्फोर्स कराने का। बट वहीं पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ये स्टेट के लिए गाइडलाइंस हैं कि वो सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करे। तो जब स्टेट को गाइडलाइन दे रहा है यानी इंडिविजुअल का यहाँ पे कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। अब डायरेक्ट राइट्स नहीं है, देयरफॉर उनका वायलेशन नहीं है तो इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन दी कोर्ट्स। तो कोर्ट्स में एनफोर्स नहीं है तो इसको हम नॉन एनफोर्सिएबल बोलेंगे। इट इज़ जस्ट द एस्पिरेशन फॉर अ वेलफेयर स्टेट, नॉट जस्टिसिएबल बिकॉज हम इन्हें कोर्ट में नहीं ले जा सकते। इट इज़ नॉन एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट। नेक्स्ट इज जो फंडामेंटल राइट्स आते हैं हमारे 12 to 35, उसमें बेसिकली हमारे पास कुछ राइट्स हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू रिलीजन एक्सेट्रा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑल। सो ये लीगल रिकोर्स क्या, अगर ये राइट्स वायलेट होते हैं तो सिटीजन डायरेक्टली अपना कोर्ट में जाके उसको फाइल कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी रेमेडीज एज पर द वायलेशन कोर्ट से ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या था, जब हमारे पास पहले फंडामेंटल राइट्स इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट अगर अभी की हम बात करें तो वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। एक जो फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, उसको पहले तो इंक्लूड किया गया था बट इट वाज रिपील्ड लेटर बाय 44th अमेंडमेंट इन 1978 और इसको 31 से हटा के हमने 300A में ट्रांसफर कर दिया, विच इज़ एक्चुअली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। नाउ इट इज़ अ लीगल राइट बट नॉट फंडामेंटल राइट। वहीं पे जो DPSP है ये क्योंकि एक तरह का ब्लूप्रिंट है वेयर वी टॉक अबाउट इंडिया सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक तरह की आउटलाइन प्रोवाइड करता है कि स्टेट को फर्दर किस तरह से काम करना है जिससे कि वो एक वेलफेयर स्टेट को फॉर्म कर पाए। द वर्ड वेलफेयर स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेलफेयर स्टेट वेयर ओनली द
वेयर आई कैन से ओनली द पॉइंट इज कि जो भी हमारा स्टेट है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिबर्टी और फ्रीडम पे बात करेगा। फर्स्ट इज विजन फॉर सोसाइटी, क्योंकि जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी अगर हमें देखनी है, उस जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी को अगर मैनेज करना है, तो यानी कि इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी दोनों ही प्रेजेंट होना ज़रूरी है। और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टेट प्रोवाइड करेगा बाय द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड बाय ट्रीटिंग ईच पर्सन इन द सोसाइटी इक्वली। की डायरेक्टिव्स हैं जैसे राइट टू वर्क, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर 44, राइट टू एजुकेशन, प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट्स, गाइडिंग स्टेट एक्शंस। ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टेट को इंश्योर करना है कि ये डायरेक्टली जो लॉज हैं ये इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, तभी हम इसको बोलते हैं डायरेक्टिव्स। Directives in the sense it is giving the direction to the states, non-justiciable because it cannot be directly enforced by the courts, but it is very important क्योंकि गवर्नमेंट को, लेजिस्लेटिव को, एग्जीक्यूटिव के जो एक्शंस हैं उनको गाइड करने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए, उनके लिए एक काइंड ऑफ एक फिलॉसफी का काम करेगा हमारा DPSP। इसीलिए इट इज़ हैविंग द सो मच इम्पॉर्टेंस बिकॉज इवन दो इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल एंड नॉन इन्फोर्सिबल, इट इज़ द वेरी important part as it acts as a blueprint for social justice. Now we were discussing there were certain differences, there was certain relationship. So relationship बनेगा fundamental rights plus DPSP फॉर्म करेगा हमारा इक्वल्स टू वेलफेयर स्टेट। ये हो गया हमारा रिलेशनशिप। डिफरेंसेस पार्ट 3 पार्ट 4, फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर वेयर एज जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो पॉजिटिव इन नेचर होंगे बिकॉज इट इज़ डायरेक्टिंग द स्टेट। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे वो जस्टिसिएबल होते हैं एंड DPSP इज नॉन जस्टिसिएबल, देयरफॉर इट इज़ नॉन एनफोर्सिएबल। फंडामेंटल राइट्स हम इंडिविजुअल सेंट्रिक बोलते हैं क्योंकि जो इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं हम स्पेसिफिकली इंडिविजुअल को राइट प्रोवाइड करते हैं, ना कि सोसाइटी एज अ होल। और वहीं पे जो हमारे DPSPs हैं दोज आर सोसाइटी सेंट्रिक बिकॉज कलेक्टिवली एक कॉमन गुड की बात होती है, एज अ सोसाइटी लोगों को वेलफेयर की बात होती है, तो इट इज़ फॉर अ कलेक्टिव गुड, सोसाइटी सेंट्रिक होता है। जो फंडामेंटल राइट्स है ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करेगा, बट वहीं पे जो DPSP है दैट एम्स एट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड कौन करता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट है, इट एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स। और वहीं पे अगर हम बात करें DPSP को, तो उनका प्रोटेक्शन का काम है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि यही फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड दीज DPSP इनटू अ सोशल वेलफेयर स्टेट बाय फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस एंड फर्दर फ्रेमिंग द लॉज एंड अप्लाइंग दीज लॉज इनटू द सोसाइटी और उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाती है। नाउ देयर आर सर्टेन हिस्टोरिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि कहता है कोर्ट वर्सेस लेजिस्लेचर की लेजिस्लेचर ने बना दिया फंडामेंटल राइट्स और DPSP, बट कोर्ट उसको किस तरह से इंटरप्रेट करता है। सो सबसे पहला केस इज चंपाकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1951 का केस है। इसने बोला दैट इनिशियल व्यू वाज दैट फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल ओवर DPSP। फंडामेंटल राइट्स हमेशा अपर हैंड में रहेगा इफ there is a comparison between FR and DPSP. सो चंपाकम दोराईराजन के बाद आया गोलकनाथ केस, उसमें आया पार्लियामेंट वाज डीम्ड अनएबल टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ऐसा माना गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर ही नहीं सकती है। तो फंडामेंटल राइट्स अगर अमेंड नहीं होंगे तो यानी कि उसका जो चेंजमेंट जो हो रहा है उसके लिए हमने पार्लियामेंट को पावर दे ही नहीं रखी है। आफ्टर दिस केस एक और इम्पॉर्टेंट केस आया केशवनंदा भारती केस, जिसने बोला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने पहले तो पावर दी पार्लियामेंट को कि वो अमेंड कर सकती है, अमेंड करेगी अंडर आर्टिकल 368, पर 368 में भी जो अमेंडमेंट होगा वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो। तो DPSP आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, और जो हार्मनी है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, एक प्रेजेंट है दूसरा नहीं है, या फिर दोनों का जो प्रेजेंस है वो ये इंश्योर करेगा कि देयर इज़ अ हार्मनी बिटवीन द टू, क्लैश नहीं होगा बट अ काइंड ऑफ पीस बिटवीन द टू। फिर आया मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसने बोला कि
जो एम्फेसिस है वो हार्मोनियस बैलेंस है बिटवीन एफआर और डीपीएसपी में, तो देयरफॉर बैलेंस की ज़रूरत है, ना ही एक किसी को बैलेंस करेगा ना ही दूसरा किसी को ओवर पावर करेगा। तो एफआर वुड बी इक्वल्स टू डीपीएसपी ओनली। सो ये मिनर्वा मिल्स के बाद एक और केस आया जिसका नाम है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 1993 का केस था। उसने बोला राइट टू एजुकेशन अगर डीपीएसपी में है सो मेड पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21। सो सी द रिलेशन बिटवीन द टू, ना कोई किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, अगेंस्ट ना जाके दे आर वर्किंग ऑन टू द सेम पॉइंट ऑफ डिस्कशन और सेम पॉइंट ऑफ इश्यूज, और उन इश्यूज को कैसे हटाना है डीपीएसपी गाइडलाइन देता है, फंडामेंटल राइट्स राइट प्रोवाइड कर देता है। तो अगर राइट टू एजुकेशन है, डीपीएसपी ने भी यही बोला कि राइट टू एजुकेशन स्टेट को इंश्योर करना है, तो स्टेट ने एज अ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A में उसको प्रोवाइड कर दिया। तो काइंड ऑफ का ऐसा रोल है जो कॉम्प्लीमेंट्री है टू ईच अदर, ना कि देयर इज़ अ डिफरेंस और देयर इज़ अ टेंशन बिटवीन द टू। सो ये कुछ केसेस हैं जिनसे हमें समझ आता है कि ये जो दोनों पिलर्स हैं इनका क्या रोल बनता है। पहला तो हो गया दैट इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री पिलर, क्योंकि दोनों ही इसी चीज़ के लिए काम करते हैं कि कैसे एक सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। फंडामेंटल राइट कह सकते हैं कि नेगेटिव एक तरह का राइट प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्टेट को गारंटी करना है ये, और अगर स्टेट गारंटी नहीं करता है तो इंडिविजुअल के पास राइट्स है कि वो कोर्ट चला जाए। बट जो डीपीएसपी है वो पॉजिटिव स्टेट एक्शन की बात करता है, क्योंकि स्टेट को पहले ही बता दिया है कि इन चीज़ों को फॉलो करना है। सो इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव कंस्ट्रेंट प्रोवाइडेड ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट। एक्सपेंशन हो जाता है राइट्स का, क्योंकि जैसे आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बताया, बट थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस क्या है, बहुत सारे राइट्स डेराइव हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी कह रहा है राइट टू हेल्थ देना है, डीपीएसपी कह रहा है राइट टू एजुकेशन देना है। तो ये सारे राइट्स किस में जा रहे हैं, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो देयरफॉर डीपीएसपी काम क्या कर रहा है, एक्सपेंशन ऑफ द राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स में राइट्स दिए हुए हैं उन्हीं को उनका स्कोप बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, डीपीएसपी, जिसकी वजह से स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे विद द हेल्प ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। नेक्स्ट इज एनरिच्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस, मतलब कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके पास काफ़ी इंटीग्रेटिव अप्रोच है, और ये जो अप्रोच है इसको इसका हेल्प क्या होता है, दैट इट्स प्रोमोटिंग अ बैलेंस्ड एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस एंड वेलफेयर प्रिंसिपल। दोनों प्रिंसिपल्स को कहाँ कब कैसे अप्लाई करना है ये इंश्योर करेगा। नेक्स्ट इज डायनेमिक बैलेंस, जुडिशरी एक्टिवली इंश्योर्स दैट लेजिस्लेटिव पॉलिसीज अलाइन विद बोथ इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड सोसाइटल गोल्स इंश्योरिंग प्रोग्रेसिव गवर्नेंस। क्योंकि देखो अगर हमें स्टेट को चलाना है तो देयर इज सर्टन लॉ एंड ऑर्डर, कोई लॉ ऑर्डर होता है, और लॉ ऑर्डर का मतलब क्या है, सोसाइटी को एक प्रॉपर रेगुलेशंस के अंदर बांध देना। वो क्या हो गया, इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या है कि एक तरह का हमने गवर्नेंस के लिए इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमने लॉ एंड ऑर्डर लगाया, लॉ एंड ऑर्डर में हमने सोसाइटी को बांधा, बट ऐसा नहीं बांधा कि उनकी लिबर्टीज़ ही ख़त्म हो गई, लिबर्टीज़ भी प्रोवाइड करें। और एज अ सोसाइटल एक गोल क्रिएट हुआ कि देर आर सर्टेन लिबर्टीज़, बट अगर उसको प्रॉपर अलाइन करवाना है अपनी पॉलिसीज़ के साथ, तो उनको एक रूल्स के अंदर बांधना होगा, उन्हें बताना होगा कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ साथ जब हम उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड करेंगे, वहाँ बनेगा प्रोग्रेसिव गवर्नेंस, कि हम किसी लॉस को फॉलो करके उसकी वजह से हम सिविलाइज्ड भी हैं, प्लस हमारे पास कुछ लिबर्टीज़ भी हैं जो हमें एक फ्रीडम और हमारे पास राइट्स का एक हमको कंटेंट देता है कि अगर कुछ वायलेशन होता है उसके लिए भी हम कोर्ट जा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें प्रोवाइडेड हैं, एक तरह से बंधे भी हुए हैं और एक तरह से फ्री भी हैं। तो ये जो ओवरऑल जो हमें स्टेट प्रोवाइड करता है एज फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, जो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है, तो ये क्या है, इट इज़ इंश्योरिंग द प्रोग्रेसिव गवर्नेंस। सो अगर हम की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि नेगेटिव राइट्स होंगे, रेस्ट्रेंट होगा स्टेट एक्शन पे, पॉजिटिव राइट्स हैं स्टेट ड्यूटीज़ के ऊपर क्योंकि स्टेट को फॉलो करना है, जस्टिसिएबल क्योंकि हम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड 226, नॉन जस्टिसिएबल बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल। इंडिविजुअल लिबर्टीज और प्रोटेक्शंस की बात करता है, बट हियर इट टॉक्स अबाउट द सोसाइटी। Courts can strike down laws which are violating DPSPs and courts can invalidate laws solely for violating DPSP। अगर कोई ऐसा फंडामेंटल राइट है जो लोगों के राइट्स को कोई ऐसा लॉ है जो लोगों के राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो वो वाला जो लॉ है वो
कोर्ट ख़त्म कर देगा, उसको इनवैलिड बता देगा, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है। वहीं पे अगर मान लो कोई ऐसा लॉज हैं जो डीपीएसपी को वायलेट कर रहे हैं, यानी वहाँ पे लेजिस्लेचर ने गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, तो उन लॉज को भी इनवैलिडेट कर देगा कोर्ट। सो अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स और डेटा प्रोटेक्शन का क्या इम्बैलेंस है या क्या बैलेंस है विद इन द स्टेट पॉलिसीज़, वो आता है। उसका एग्जांपल है जैसे ईयू चार्टर बताएगा 52 फर्स्ट आर्टिकल दैट इट mandates द रिस्पेक्टिंग ऑफ एसेंस ऑफ राइट्स इवन व्हेन लिमिटिंग देम, मतलब कि एक काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस की फंडामेंटल राइट्स में और जो डायरेक्शंस है उसमें क्या कनेक्शंस होते हैं। प्राइवेसी एंड डेटा, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन आर डीपली इंटरवाइंड विद दी स्टेट पॉलिसीज। डीपीएसपी ही हमारा बता देता है इन दोनों का कनेक्शन। बैलेंसिंग एक्ट्स, बिकॉज आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन को भी बैलेंस करना है इंक्लूडिंग इंडिविजुअल राइट्स और जो स्टेट पॉलिसीज़ हैं, जिससे कि जो आपका गवर्नेंस है वो प्रॉपर हो सके और जो ग्लोबल जो चीज़ें चल रही हैं, ग्लोबल जो रिकॉग्निशन हो रहा है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, आप उसके साथ अपने नेशन के लॉज को अलाइन कर पाएँ। सो ये रिलेशन क्यों मैटर करता है? इस रिलेशन के जो आपस में जो इनका रिलेशनशिप है दैट इज़ कंटिन्यूस एवोल्यूशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट, जिससे कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एज एन इंडिविजुअल भी उनका डेवलपमेंट हो रहा है और एज अ सोसाइटी भी उनका वेलफेयर हो रहा है। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन करे जा रहे हैं वो इक्वली करे जा रहे हैं सारे रिसोर्सेज के, सारे डेवलपमेंट के, सो दैट ऑल दीज थिंग्स कैन बी प्रमोटेड एंड बैलेंस्ड अप्रोच कैन बी टेकन केयर ऑफ। सिटीजन डिग्निटी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लॉज ना तो फंडामेंटल सिर्फ राइट्स प्रोवाइड करके उनको एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जिससे कि सिटीजन्स की डिग्निटी और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो डिसेंसी है, उसको मेंटेन कर सके। जुडिशियल ओवरसाइट, क्योंकि कोर्ट्स को हमने बताया है कि दीज आर द गार्जियंस ऑफ दीज राइट्स, और अगर गार्जियंस रहते हैं तो अपने अपने जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस भी कंटिन्यूसली देते रहते हैं। तो ये जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस दिए जा रहे हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है बैलेंस बना के रखना, बैलेंस बिटवीन दी सोसाइटल एंड इकोनॉमिक रियलिटीज़। और ये जो रियलिटीज़ बन रही हैं, ये कौन इंश्योर कर रहा है? इन रियलिटीज़ को एक्चुअल में अप्लाई कराने के लिए, इन रियलिटीज़ के हिसाब से लॉ बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारा स्टेट। सो कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि थ्रू दिस जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस जो राइट्स हैं उनका एक्सपेंशन हो रहा है, जो डायरेक्टिव्स हैं उनको फॉलो करके नए लॉज बनाए जा रहे हैं। अल्टीमेटली इफ़ यू सी द टुवर्ड्स द हार्मोनियस कॉन्स्टिट्यूशनल विजन, तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन दी प्रियम्बल। ये चारों वर्ड्स वी हैव सीन इन दी प्रियम्बल। इनोवेशन इज़ अ डिफरेंट वर्ड। इनोवेशन क्योंकि हम कोर वैल्यूज़ पे आ गए हैं, वरना इसकी जगह वी हैव फ्रेटर्निटी। सो जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, क्योंकि हम इक्वालिटी की बात करते हैं। लिबर्टी, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग सर्टन फ्रीडम्स टू आर इंडिविजुअल्स, और वो जो फ्रीडम्स हैं वो चॉइसेस पे हैं, वो उनके बिलीफ, फेथ और anything they want to thought of or any expression they want to expresses। और नेक्स्ट आता है इक्वालिटी, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड दोज इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर irrespective of any kind of discrimination। here innovation is there, therefore adapting new challenges while upholding the core values। या फिर यहाँ पे we can also say कि fraternity का भी पार्ट मेंशन होता है। fraternity means because we have different religions present in our country, different culture present in our country, but क्योंकि अब यूनिटी का एक पॉइंट है, वी हैव टू शो केस कि इतने सारे डाइवर्स कल्चर के बाद भी वी हैव सर्टन काइंड ऑफ ब्रदरहुडनेस। सो वो जो कहाँ से आएगी? फ्रेटर्निटी से। और ये जो सोसाइटी एज अ होल है, ये जस्ट फ्री और इक्विटेबल सोसाइटी हो, ये इंश्योर करेगा ये फ्रेटर्निटी वाला पार्ट, बिकॉज वी हैव टू लिव विद all the feeling of kind of nationalism, patriotism towards the nation and feeling of brotherhood amongst each others। so policy holders को भी ये ध्यान में रखना है कि citizens के साथ साथ जब वो laws बनाएंगे तो वो society as a whole का भी ध्यान रखेंगे, और इन दोनों चीज़ों में बैलेंस की ज़रूरत है, फंडामेंटल राइट्स और DPSP के। एक पॉइंट के 2 फेस हैं वी कैन से, और दोनों फेसेस का होना ज़रूरी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, क्योंकि दे आर
are driving the nation towards its ideals. और जो ideals हैं वो policy makers ensure करते हैं कि वो ideals को हम proper follow up करवाएं. So this was all in this slide. I hope you understood what is the meaning of DPSP, what are the articles of DPSP, what is the difference between DPSP and fundamental rights, what are the important case laws comes under DPSP, और ये हारमोनियस कॉन्स्टिट्यूशनल विजन क्यों ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए. आई होप इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस वीडियो नाउ, एंड इफ़ देयर इज सर्टन क्वेश्चन और इफ you have certain doubts, you can always mention in the comment that I will clear very soon. And I hope that you are getting the understanding of the constitution day by day with each class. So let's meet tomorrow with a new video, with a new session. Thank you so much. Thank you, and please like, share and subscribe.